I always stands for, you can say, incremental or simply marginal capital output ratio. It means what? Okay, number of units required of capital to produce 1 unit. अब suppose कि it's 2:1, or better to say 2/1. बहुत simple है. इसका मतलब ठीक है, we need 2 units of capital to produce 1 unit of output. If capital output ratio increases, okay, from this to this, it means what? कि now we need 3 units of 3 units of capital to produce 1 unit of output. So if the capital output ratio increases, it means that we are not using our capital efficiently. Now the poor country, they don't have technology. They are basically not able to manage their resources very well. So in case of poor countries, capital output ratio is very high, very high. Suppose it's a case of India, 3:1, and it's a case of Japan. Means what? We need 3 units of capital to produce 1 unit output. And Japanese people, they use 2 units of capital only to produce 1 unit output. It means they are using their capital more efficiently than we people. Okay, so high capital output ratio, they are not good. It should be less. If the capital output ratio is coming down, so it simply means that now the country is able to utilize their resources in a better manner. Now come to, this is your average. Incremental always is additional. In order to make, this is suppose the average capital output ratio of India. It means since the beginning, whatever we have produced using the capital, on an average, it is our 3:1. Now come to I means incremental, marginal means additional. Now when we are making the, can say, next unit, it comes to 2.5. Now in order to produce the next unit of output, we needed only 2.5 units of capital. It means the capital output ratio, it is falling. Incremental, the additional capital output ratio, now it is less than the average. From 3, it has come down to 2.5. It means now we are able to utilize our resources in a better manner, more efficiently. So marginal word आपने सुना होगा. Marginal means always additional. Maybe it is marginal cost, marginal productivity, marginal revenue, marginal cost of lending rate, and here it is termed as incremental. Incremental means, I hope ki you got the purpose. Okay. Let me आती है. A special purpose acquisition company. ये आपने question पूछा है. So I cannot see Sagar your question. Question लगता है ऊपर निकल गया. You have mentioned, आपके question में ही आपका answer है. A special purpose acquisition company means for some specific purpose company is being formed. And best example you can say it's the case of NARC, National Asset Reconstruction Company. One more company was formed, that is called Indian Debt Resolution Company Limited. So these two together, they are called bad bank. So they have been formed, they have been registered under the company law for a special purpose. And what is the purpose? To buy NPA from the banks. Their purpose is only one. NARC will acquire or buy the NPA from the bank, and the recovery will be done by ID, Indian Debt Resolution Company Limited. So these are the companies or those companies which are formed for some specific purpose, for some special purpose. So they are called, you have mentioned. Okay, so I cannot see the questions now because of the, chalo, I got that thing. Okay, repo rate. Kuldeep has mentioned, during inflation, RBI buys or sells government securities. Please explain. It's a very simple, Kuldeep. During inflation, what RBI is trying to do? To reduce money supply. It's a very common. If RBI starts buying the government security, so then money will come from the RBI into the pockets of the seller. So then money supply will increase, leading to more inflation, more money supply. But when inflationary pressure is high, so what the RBI will try to do through the open market operation, it will try to squeeze out, to take out money from the market. So for that, it is going to issue bonds, maybe other government security. So those people who are buying government securities, so they are giving their money to the RBI. So this way, RBI is going to squeeze out money or excess money from the market.
So during inflationary pressure, definitely RBI will start selling the bond, and during the deflationary pressure, RBI will start buying the bond. I hope you get the method. Okay, now the national income means NDP. No, national income always means NNP at factor cost, net national product at factor cost. This also have discussed detail. But how well our economy is doing well, or how well our economy has performed. So best indicator is not NNP, not it's the GDP. It's the GDP. GDP is the best indicator of the performance of the country, because there are two fronts of every country, internal and external. So we try to measure the performance of Indian economy on both the front. So GDP is said to be the best indicator. But although technically GDP is not the national income is NNP at factor cost. Okay. स्विच चैलेंज ये क्या है? ये देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप पढ़ोगे पीपीपी मॉडल, तो स्विच मॉडल वन ऑफ द मॉडल यू कैन सी, बिकॉज मॉडल्स आर सो मेनी. So this type of model, can we go for switch model, if I am able to understand your question? Because under that what happens, suppose you belong to certain area and their roads are not good, maybe infrastructure is lacking. So then the people there, they will request the government. Okay, you need to promote infrastructure of that area. So on the request of the people, then that area is going to promote it. So means requirement, planning is not being done by the government. Government is working on the request of the people. So that is very good, because then people of India, they will come forward and they will participate in the process of promoting infrastructure in their own area. But in a country like India, it is not feasible, because then pata hi aapko politics yahan bahut zyada hoti hai. And yes, so government has not accepted this one. Okay, Anubhav has mentioned, sir, I am preparing for UPPCS. Can you please tell a strategy to complete economics for UPPCS? A strategy, देखो क्या होता है, the problem with the husband कि they are busy making a strategy. सिर्फ strategy बनाते हैं, कुछ नहीं करना है. 3 things you have to do. You have to listen, read and write. That's all. Go through the questions, level of question. पहले पढ़िए, सुनिए, फिर पढ़िए और अंत में लिखिए. नोट्स अपना खुद बनाइए. That is simple. 3 things you will have to do: to listen, to read and write. Writing always comes an end. First thing is to listen. That's why I'm requesting you people to go through my videos carefully. There are many people, जो question आप पूछ रहे हो, they have been discussed in detail, and still you are asking the question. It simply means you are not a good listener. Either you have escaped the video, or maybe you are busy making the notes. It's totally incorrect. Notes बनाने काम second time third time करोगे. Firstly, you are a learner, and to be a good learner, you will have to be a very, very good listener. तो पहले राउंड में आप सुनोगे, then आप पढ़ोगे good books, and then in the end you have to write. Writing always comes in. So this is simple strategy you have to follow. Doesn't matter whether it's the UPSC or PCS. So coming to the next question. Okay, recession. Sagar Kumar एक और क्वेश्चन आया है कि Sagar Kumar has asked a question कि sir, please help me. But after that, topic is missing. Okay. Now the question is, let me go through the question first. Sagar has mentioned, what is recession? Exact definition. See, there are two words. One is called deflation and second is called recession. You must be knowing the meaning of the word, inflation. So inflation is a state where prices of the goods and services, they fall. And deflation is just opposite of that. That's opposite. In case of deflation, prices, they start falling. Price कम होता है. So deflation, when price starts falling, then it will be called deflation. But
After some time, if the falling prices, so they are not stopped, then what will happen? Then output will start falling. So then when output starts falling, then deflation will be converted into recession. It's a very dangerous, because when output starts falling, what will happen? Producers, they won't be able to find the buyer. They have done the production, but demand is missing. So they will further cut the production. More people will be retrenched from the job. Their income will fall. It will lead to further less demand. Then when demand is falling, again production will have to cut, and gradually country will be falling into debt. We can say recession. It's a very dangerous. Okay. So I hope you got the answer. Okay, what is the purchasing power parity exchange rate? Purchasing power parity, purchasing power. Okay, now take the case of dollar. Take the case of dollar. $1 right now, it is equal to 82.5 around. It's a basically notional or nominal rate. But do you think the purchasing power of $1, you must be knowing meaning of purchasing power. Yes, so $1 and 82 rupees. So do you think the purchasing power is of the both is same? No. Purchasing on the basis of purchasing power, $1 is equal to 23 rupees. Even today, इसका मतलब कि $1 से जितना आप सामान खरीद सकते हो, उतना ही सामान खरीदने के लिए in terms of Indian currency आपको 23 रुपए चाहिए. यानी to buy a thing, purchasing power of these two, $1 and 23 rupees, it is equal. It is equal. So on the basis of purchasing power, $1 even today it is equal to 23 around. It fluctuates, but it is being traded at more than 82 rupees. So that is basically market force demand supply. To be honest, it's an artificial exchange rate. Can we make Indian currency stronger against dollar? Can RBI go for evaluation? Can $1 be made equal to 23? Yes, it has the option that is called revaluation. It's just opposite of devaluation. But the problem is, if RBI is doing so, Indian economy is going to collapse. No country in the world till today has ever gone for revaluation, because then export will start falling. The remittances, they will come down to zero. Tourism, it is going to be hurt very, very badly. So supply of dollar will be very, very less now. Okay, who manage FPI? So different authorities are there. Basically, FPI, whenever they either invest the money or take the money out. So they pass through RBI channel as well as SEBI, under that share market fund. So there are two regulators. And regarding that, because whenever they are, suppose foreign portfolio investors, they are investing in Indian market. So when they invest, so they are investing in terms of hard currency. So when the hard currency comes, it will via RBI. So they will have to follow the guidelines of the RBI. But ultimately, their money is going to the share market, where who is the boss? So SEBI. So there, SEBI is the regulator. So who is going to regulate these people? So in the past, always problem hua hai. Because of different types of regulatory authority, so दोनों के बीच में टकराव भी हुआ है. The RBI says कि I am going to regulate them. SEBI may say, since they are coming to me, I am going to regulate them. That's why questions they are raised always. Why to go for different types of regulator for different cases? For example, for insurance, it's a IRDA, IRDA. तो क्यों नहीं हम लोग एक ही रेगुलेटर पे जाते हैं? अभी तक तो नहीं हुआ है. But here it is decided by the regulation. It is RBI. ये RBI करती है. RBI उनको regulate करती है. You got them. What is convertible bond? It's very simple. Those bonds which are converted into shares after some time. Bonds, they are debt instruments. They carry fixed rate of interest. So when the concerned authority who is issuing bond, the terms of issues, it says if these bonds are convertible, and after some time, for example, 5 years, if these bonds will be converted into equity shares, after 5 years, what will happen? Company will be converting bond into equity share. So this is the concept of convertible. Convertible, as the name suggests. Let me now go through the question. Okay. PPP, yes, so many public-private partnership. It is the policy of 91, LPG model. P for privatization, giving more role to the private sector. So यहीं पे बहुत तरह के मॉडल है. For example, first is called BOP model. As the name suggests, build, operate, transfer. Suppose I am the government, you are the private sector. पूरा नाम पढ़ो.
So you have been given the task, build मतलब बनाइए, then operate यानी उसको आप रन कीजिए, उससे पैसे कमाइए, and after some time you will have to transfer it to the government. बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है. तो कई तरह के हो सकते हैं, so many model. अब जैसे एक मॉडल हो सकता है कि both are going to contribute equally, funding दोनों करेगा and both are going to manage. Another case can be government will be funding but it will be managed by the private sector. Maybe again, funded and managed by the private sector. It's all about mutual understanding. The terms of the contract, that is very important. And yes, when the terms of the contract they vary, so they are named differently. They are named differently. So you have other question, BOT model, where can say built, yani private sector, they are given some time. Suppose some project is handed to the private sector by the government and given the time of 50 years. पहले बनाइए, सारा पैसा खर्च करो, operate करो, उससे कमाओ भी, and after some time, it will have to be, ownership will have to be transferred to the government. Okay. Difference between privatization and disinvestment. ये हमने क्लास में बहुत डिस्कस किया था. Moreover, by taking the examples of studying disinvestment. Just wait and go to the question. Since I am not comfortable with the technology, थोड़ा मुझे दिक्कत होता है. Let me bring the question. It's moving all the time. Anyway, see privatization, LPG model 91. Now see the meaning of the word P for privatization. So government has not defined the word for you can say privatization very minutely. The only line it has said कि giving more role to the private sector. So in the process of economic development of Indian economy, private sector should be given more role. More role. So then confusion is created. Now suppose one question I'm asking you, suppose I am the government, owner of PSU, and you come under private sector. So only 10% shares were sold to you. Government ने आपको 10% share बेचा. So you become the owner by purchasing the share, but ownership is 9%, 10% only. Major shareholder will be the government. And since government is the major shareholder, so who will dominate the proceeding? Who will take the decision? The government. Management will remain in the hands of the government. So here I have sold only 10% share, but do you think आपका role किसी तरह से बढ़ा है? No. You have become the owner. Ownership is 10%, but you have not been given bigger role. Your role has remained the same. आपका role वही का वही है. You cannot do anything. So till 49%, no issue. Till 49%, it's a privatization. Disinvestment. But if I'm selling 51%, I'm selling 51%. So when I sell 51%, you become the major shareholder, and the government becomes the minor shareholder. And when you become the major shareholder, so definitely by law, management will be transferred from the government into the hands of the private sector. So do you think here the role of the private sector, it has increased? Yes. Now it's the case of privatization. Till 49%, it's a disinvestment, and once 51 is touching, if the shares minimum of 51% equity share is transferred, then it becomes privatization. And when 100% it is sold, so then it is called, it was fully, can say, completely privatized. यानी पूरी तरह से privatized हो गया. That was the case in case of Air India. In case of Air India, I hope you got the things. And moreover, this topic also I have discussed, बहुत detail में discuss किया. I am very, very surprised that you people are asking those questions. Those topics coming from where I have discussed the thing in very, very detail. So it's a very surprising and very disappointing for me as well. Okay, now coming to next question. India demand because of population. So China has more population than India. China not actually right. It's China. China has more population than India. According to this, China has more demand than India. No. India may demand. Recently, Indian population has surpassed Chinese population. Now our ranking is number 1.
In India, demand is very high. One of the reasons, the main reason is population. That's fine. But other reasons are also there. Other reasons kya dekho? And particularly after 1991, in India, things are changing at a very fast rate. Very fast rate. Okay. For example, society is being transferred. देखो क्या होता है? So there are three types of people. People, they belong to three different income group people. You can go for four, maybe five. High income group people, medium or middle class income you can say people, and third is called low income group people. तो क्या होता है कि जब तक कोई पर्सन एक ही ग्रुप में रहता है, सपोज कि यू बिलोंग टू मिडिल क्लास इनकम ग्रुप पीपल, तो आप चेक करोगे योर डिमांड इज गोइंग टू रिमेन द सेम, मोर और लेस आपका डिमांड तकरीबन सेम होता है. बट व्हेन यू चेंज द ग्रुप, if you move from middle class income group people to high income group people, it means you are being transferred. Transferred. Society is getting transferred. If people are moving from middle class income group people to high income group people, तो जैसे लोग ग्रुप को मूव करते हैं छोड़ के अगले ग्रुप में, तो देयर डिमांड इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. और ये सपोज कि रिजल्ट आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया, एंड वहीं से आपका देखोगे योर डिमांड इज गोइंग टू सडनली चेंज. तो व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर 91? Because of globalization, opportunity have been created, and moreover, some of the measures taken by the government, कि low income group people, so they are getting converted into middle they are converting into high income group people. So the rate of conversion is very very high, leading to more and more demand. And this is true in case of rural area as well. The rural people, their economic condition has improved a lot. Yes, when I was like you people, तो इन रूरल एरिया इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड द लेबर. बहुत ही आसान था लेबर मिलना. और मुझे याद है एक लेबर को बुलाते थे तो 4 लेबर आते थे. नाउ डेज सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट. इन द रूरल एरिया इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द लेबर. लेबर आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज दे हैव ऑल्सो गॉट मेनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मनरेगा. So these are the problems, it's not the population. Moreover, China's population earlier, it was of one child policy. So now China has changed the policy, and in fact China is trying to incentivize the people to go for more and more children. तो जो चीजें चाइना के अब समझ में आ रहा है, तो हमारे समझ में हजारों साल पहले आ गया था. Coming to now next question. Okay, other reasons are also there. Let me go to the next question. What is fiscal stimulus? Jignesh, try to get the things. मैंने आपसे क्लास में क्या कहा था कि you have to keep on increasing your creativity. और creativity तभी बढ़ेगी when you think in your mother tongue. अपने लैंग्वेज में स्टिमुलेट करना. Let me ask one question. अब आग में जब घी डालते तो क्या होता है? आग बुझ जाता है या तेज हो जाता है. तो ये घी क्या है? स्टिमुलस का काम कर रहा है. योर एनर्जी लेवल इज वेरी लो. तो आप क्या करते हो? एनर्जी ड्रिंक पीते हो, तो इट इज गोइंग टू एक्टिवेट यू. तो फिस्कल स्टिमुलस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. इंसेंटिव्स दे आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द इकोनॉमिक एजेंट्स ऑफ इंडिया so that they can be encouraged, they can increase the economic activities. For example, producers are not ready to come to do the production where in some state, maybe called backward states of India. So government can give them some incentive, government can give them some investment allowance. So that is also, it is a part of fiscal stimulus. तो ये तो बहुत सिंपल बात है, investment. Okay. Depreciation of rupee can result in increase in domestic inflation. So very simple. When rupee is getting weaker, import will be costly. And regarding India, 3 things, if you remember my classes, in detail I have discussed. Because when rupee is getting weak, it is depreciating against dollar, so leading to high cost of import. Import will be costly, and it is very very risky for India, country like India, because of our components of import. 3 चीजों का import हम बहुत ज्यादा करते हैं: crude oil, coal and gold. Take the case of crude oil. So crude oil, even today, in between 80 to 85% we are importing, and
crude oil, irrespective of the price, whether the price of crude oil is increasing or decreasing, you cannot cut the import. You have to go for importing the same quantity. Without crude oil, country cannot be run. So crude oil will be costly when rupee is getting depreciated. It means for the oil companies of India, buying crude oil, it will be costly. So what they will do? They will increase the price of petrol and diesel, or the petroleum product, their price is going to increase. And it is known to everyone, if petrol, diesel mahanga, to sab kuch mahanga. It is going to bring inflation. So very simple. When the rupee is getting depreciated, import will be costly. And when import is costly, it is going to inflate the economy. Indian economy particularly, it's a very, very vulnerable, very, very vulnerable. You have seen after Ukraine war, Indian currency depreciated. And as a result, for the last 1 year, the rate of inflation as measured by the CPI, except for the month of December 2022, it is more than the limit of 6%. So these things are current. I hope you got. Any other question? So there is a question with respect to manufacturing sector not growing. So in spite of all the tax incentives. Okay, Sasi Singh has other question. What is SQflation and how it differs from SQflation? Sorry, Sashi, I am not unable to get the question. मैं कोशिश करूंगा ये क्वेश्चन में कल आपको जवाब दूंगा. मैं या तो भूल रहा हूँ, because these words it's very rarely used. तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है? Kuldeep Kumar, what is the difference between depression and deflation? Depression, don't use the word depression. Better to use the word recession. Recession को कुछ लोग depression भी कहते हैं. So depression or recession and ये deflation अभी मैंने आपको discuss किया है. Even the prices start falling, it is deflation, and if it is not controlled, it will continue so long. A time will come when the output will start decreasing. So then it will be converting into, and moreover, officially, technically, since the production in India, GDP growth rate, if for the 3 consecutive quarters, लगातार 3 quarters तक, if the GDP growth rate becomes negative, remember technical thing, consecutively for the 3 quarters, क्योंकि GDP data भी हमारे देश में क्या होता है, release quarterly, तो लगातार 3 quarters तक अगर GDP growth rate becomes negative, so then officially the country will be declared it is in recession. It is in recession. So threat were there during, you can say, remember, during the COVID-19 lockdown, what happened? After the lockdown was imposed, the first quarter GDP growth rate was -24%, then -7%. So that was extraordinary situation. Okay. So I hope देखो difference between MSF, marginal standing facility. Marginal standing facility. It is basically one of the initiatives taken by the RBI, and this policy is of 2012, if I am not wrong. And banks, remember, banks' liquidity can change within few hours. So here, in case when the banks are facing the acute problem of liquidity, so then they can get loan from the RBI only for 1 day. Only for 1 day. So under the MSF window, commercial bank, they get loan from the RBI only for 1 day. Now short-term loan, very, very short-term loan, the rate of interest definitely it will be higher. So simply they apply, they request the RBI, requisition bolte hai, computer online, and immediately it is being sanctioned by the RBI. So that is basically concept of MSF. 1 day loan doesn't mean, loan is only for 1 day. So there is no question of purchase and the repurchase agreement. And yes, it is basically no collateral is needed by the RBI to give loan. So this is basically new concept. Okay. Earphone is connected here. Gabla mat. Okay. So even you can ask the question so that मुझे सुनाई दे दे. Prasanna Sharma. Sir, why manufacturing sector is not showing growth despite of PLI scheme and tax cuts? It will take time. It will take time. It has improved.
but throughout the country, things are not looking very good. There are few states only where things are improving. We are able to promote manufacturing. आप देख सकते हो, there are many areas there. From import substitution, we have moved to export promotion. Yes, Apple का mobile phone बनना शुरू हो गया है. Make in India. Yes, you can say Vande Bharat train. Yes, India has started producing defense goods as well. India has exported defense goods worth 13,000 crore. Things are improving, but it's not only the cup of tea of the central government, a state government, so they will have to respond. They will have to respond. There are few states who can be called backward states of India, so they are not responding. Take the case of the poorest country of India on the basis of per capita, it's the state of Bihar. Second, from the bottom, it's a UP. So let us make a comparison between UP and Bihar. So it seems UP government is moving in the right direction, trying to do the homework, trying to impose, you can say, maintain good law and order, trying to improve the infrastructure of UP. Yes, so things are looking very good. But what about the state of Bihar? Bihar state, again, it is moving in a reverse gear. Now Bihar government is busy going for census on the basis of caste. What is the meaning of that? Why? Okay, the preference they are saying. Who will go to Bihar? Because Bihar's approach has become regressive. UP approach is progressive. So difference, Bihar is going to be the number one state right from the bottom, because things are not looking very good. Government, it is clueless. They are busy saving their seat. No one is thinking about. So ये problem होता है. So PLI scheme is very successful, but it will take time because there are many hurdles before we can promote manufacturing. Doing production in the secondary sector, it is more tough than doing production in services. So we cannot say it's a very good. Our exports, they are increasing all the time. It's another thing, the imports are increasing at a faster rate. Still, there is a trade deficit of $15 to $18 million per month. But we are hoping, we are very, very hopeful in the future, things are going to improve. Things are going to improve at a higher rate in a better motion if all the states, they participate. And unfortunately, that is not the case. I hope you got the answer, Prashana. Problem of inflation, yes, it has been solved. Now, rate of inflation, as the report came, rate of inflation in US, now it is within the limits. So now, no increase in the rate of interest in the Federal Reserve Bank in the coming days. So indication has come. Now, inflationary pressure is within reach or within control. तो अब वहां पे फेडरल रिजर्व बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाएगी. अल्टीमेटली ये क्या करेगी? अब ये कम होगा because this increase in rate of interest by the US Federal Reserve, it led to the collapse of so many banks in USA. Officially declared Silicon Valley Bank आपने देखा होगा, Signature Bank देखा होगा, and many more to follow. So ये it is basically the outcome of the poor policy making on the part of Federal Reserve Bank, and the increase in rate of interest, it is one of the major reasons. Because when rate of interest is increasing, bond prices, they start falling. And banks, they have invested, Silicon Valley Bank, अपने पब्लिक के डिपॉजिट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था. Dated security, whose maturity was very long. And when the rate of interest increased, it was historic. At the time of Ukraine war, rate of interest in the American market, the central bank, it was 0.25%. And suddenly it went up to more than 4%, 4.25%. Never happened in the history of America. And that is basically the main reason behind the collapse of American banking system. Okay. So this is totally different from those of 2008. And yes, US Federal Reserve, their government is responsible, poor policy making. Coming to now, okay, so वो solve हो गया. Coming to now the next question. Rishikesh inflation problem solved and बता दिया. Shashi had mentioned when there is an inflation market for a long time and government increases the employees' salary, but production is not increased to match the demand. So it is useless to increase salary. See, production in quantity, आपने थोड़ा उल्टा कहा कि your salary, government provides DNS allowance. So DNS allowance increase होने से your salary is not increasing. It is increasing in nominal term. It is basically in the real term, your salary remaining same. अब suppose कि last year, 10,000 of last year and 11,000 of this year.
देयर परचेजिंग पावर इज सेम। तो गवर्नमेंट ने आपके लिए 1000 रुपीज का क्या किया, डीएनएस अलाउंस दे दिया, तो इससे डिमांड नहीं बढ़ेगा, डिमांड विल रिमेन द सेम, रीजन बीइंग परचेजिंग पावर इज लॉस्ट, so demand is not going to increase. They are given to compensate for the real wage loss because of inflation. So I don't think it is going to lead to mismatch between demand and supply. Your demand will remain the same, although your salary has increased. You have other question, because of DA or maybe these types of increase in salary, demand will increase. No, demand is going to remain the same. If demand is increasing, then definitely you will have problem. So I don't think it is a wrong decision. I hope you got the answer. So, any other question? Yuri sir, एक ही अकाउंट सॉल्व होती है सारा, you are asking, ठीक है, topic wise questions are being asked. वो through account known to everyone, ठीक है, rupee ruble trade. So what the Russian government will do? It will open वो through account, where RBI ने दे दिया, but it will be open with some Indian bank. अब since Indian people they can pay it in terms of rupee ruble trade. So suppose you are importer and you are importing from Russia, so now you don't have to go to RBI to buy dollar. Whatever you are importing, this value is determined in terms of rupee maybe ruble. तो उतना पैसा आप क्या करो, अब जैसे मान लो इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में रशियन गवर्नमेंट का या रशिया का एक्सपोर्टर का अकाउंट है, वो अकाउंट, तो आपको आरबीआई में नहीं जाना होगा, उनका अकाउंट जिससे आप खरीद रहे हो उनका अकाउंट इंडिया के बैंक ऑफ इंडिया में ही है, तो रुपीज में ही क्या करना है, आपको ले जाके उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दो, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। तो बेसिकली दीस टाइप्स ऑफ कॉल, जस्ट अपोजिट इज अ नो थ्रो, क्योंकि इंडिया जब खोलेगा वहां पे इट विल बी नो थ्रो, इट्स अ वेरी इजी। आई होप कि ऑल यू पीपल आर कंफर्टेबल। Yurisha, should we continue or better to go for one more class tomorrow? So there are a few questions from YouTube as well. If you are okay, we can take. हाँ बताइए, मुझे मेरे पास जानकारी नहीं है, एटलीस्ट so, ये नॉट थोड़ा कंफर्टेबल जी थोड़ा सा बेसिक वाला क्वेश्चन है सर। ये पूछते हैं कि WTO जो है वो ज्वाइन करने की कंट्रीज को कोई कंपल्शन है क्या, एंड ज्वाइन करने के उनके फायदे क्या? नहीं, कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। देखो WTO की कहानी अगर आपने एक बार देखी होगी तो उसका बेस कहीं ना कहीं ब्रिटेन वुड में पड़ गया था। ITO नहीं बना, बदले में क्या बना, गैट बना, और गैट वाज लेटर ऑन कन्वर्टेड टू WTO 1 जनवरी 1995। तो WTO का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि बिफोर ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज आर इम्पोजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, हर एक कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन लगा लिए थे, जिससे ट्रेड वाज डिफिकल्ट, दे वर मेजर हर्डल। तो WTO जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो WTO आप पढ़ोगे सबसे मेन आपका दोहा 2001, आई होप की बंद नवंबर, बंद चेक कर लेना। तो जितने भी इश्यूज थे वो सारे रेज किए गए, इश्यूज वेयर देयर अमंग द डेवलप्ड कंट्री, वो सारे रेज किए गए। देन इश्यूज वेयर देयर इन बिटवीन डेवलपिंग कंट्री एंड द डेवलप्ड कंट्री। फॉर एग्जांपल हमारा डेवलप्ड कंट्री के साथ क्या इश्यू था, देयर इश्यू वाज इंडस्ट्रियल टैरिफ, कि उनका कहना था कि भारत जैसा जो देश है कि जब डेवलप कंट्री भारत में गुड्स को सप्लाई करते हैं तो भारत का टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा था, तो जिससे उनके प्रोडक्ट का प्राइस भारत आते आते बहुत महंगा हो जाता था, इट वाज हर्टिंग देयर बिजनेस। हमारा इशू क्या था, एग्रीकल्चर सब्सिडी, यानी डेवलप कंट्री अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते थे, जिससे क्या होता था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो फार्मर्स थे वो काफी कम रेट पे बेचते थे, बिकॉज दे वर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, और एज अ रिजल्ट हमारे फार्मर्स दे वर अनेबल टू कम्पीट विद देम। तो इंडिया का जो है सरप्लस रहते हुए भी हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था। तो सारे इशू थे, तो ऑल द इशू दे वर रेज्ड वेयर दोहा 2001। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी भी 95% ऑफ जो ट्रेडिंग ये ट्रेड होता है वर्ल्ड का, सो दे आर बेसिकली डन बाय जो WTO मेंबर है। लेकिन दुर्भाग्य से कह लो कि आज 22 साल के बाद भी एक भी इशू WTO में जो भी इशू रेज हुए तो आज तक किसी एक का जो है ना सोल्यूशन फाइनली नहीं हुआ है। दिस इज बेसिकल प्रॉब्लम। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे मान लो इंडिया की बात करें, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो इंटरनेशनल फोरम पे जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर क्या ऑप्शन है, तो लेट अस सॉल्व देम बायलैटरली। इसलिए देखोगे
कि bilateral trade agreement, regional trade agreement, so they have got the prominence. It's mainly because of the failure of the WTO. तो ये उनका है, ठीक है। अब देखो डेवलप कंट्री क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा है कि दोहा को हम छोड़ दें, दोहा में बिल्कुल वी शुड स्टार्ट विद फ्रेश एजेंडा, अब नए एजेंडा पे काम करें। और भारत भी वहां पे 77 कंट्रीज को लीड करता है। तो भारत कहता है कि नहीं, ये पहले जो है दोहा के जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उनको आप क्या करें, पहले फिनिश करें, देन वी विल कम आउट विद तो डेडलॉक है। और बहुत सही पूछो तो अब दे हैव WTO हैज बिकम लेस रेलेवेंट। और ये जो मैंने क्या कहा, इन द कमिंग डेज ऑल्सो ये जो बायलैटरल एंड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करेगा। तो इट हैज बिकम लेस एक्टिव, धीरे धीरे अपना रेलेवेंस होता जा रहा है। इसकी स्थिति बिल्कुल क्या हो रही है, तो आपको याद होगा 7 to 8 एशियन कंट्रीज दे फॉर्म सार्क का कंसेप्ट था, 7 या 8 देश थे। तो सार्क की मीटिंग हर एक साल होती थी और हर एक मीटिंग में एक ही कंक्लूजन होता था। क्या कंक्लूजन होता था कि अगला मीटिंग कब और कहाँ होगा, इससे ज्यादा सार्क आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो वही हाल अब जो है WTO का होने वाला है। एंड रिमेंबर these bilateral trade agreement, regional trade agreement, these are the outcomes of the failure of WTO, and these things are going to dominate the world trade in the coming days. I hope you said it. I have given the answer in detail. Yes, next question. सर कल वाला भी एक क्वेश्चन था, बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट में जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो बहुत सिंपल, थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं समझा रहा हूं कि बॉन्ड सपोज की अब इसको क्या हो गया, yes sir, board चलो, थैंक यू यूरी सर। See the concept. So bonds are also called dated security. I am taking very simple example. So bonds is a debt instrument or their maturity is for more than 1 year. Less than 1 year normally is a bill. So whenever bonds are issued, terms and conditions are made absolutely clear. What is going to be the rate of interest and after what period of time the principal amount will be redeemed. So suppose कि I am the government. So today I am issuing bond. And the face value of the bond is ₹100. 100 rupee, एक bond 100 का है. And the rate of interest is 10%. So this is basically called coupon rate. It means government, the issuer of bond, so will be providing interest at the rate of 10% on this value all the time, irrespective of the market price of bond. But okay, so suppose कि आपने इस बॉन्ड को खरीदा at a price of ₹100, okay, and you are getting this. Maturity period is 10 years. 10 year है, so your money is safe and after 10 years you will get principal amount for the government. लेकिन बॉन्ड में क्या होता है कि there are two conditions. देखते होंगे नॉर्मली क्या होता है कि two options are kept. एक कहते हैं call option and the second is called put option. अब ये कॉल ऑप्शन लगा दिया, इसका क्या मतलब हो गया, अब आई एम द गवर्नमेंट, यू आर द बॉन्ड होल्डर, तो बॉन्ड इश्यू मैंने किया और क्या मैंने जोड़ दिया उसमें कॉल ऑप्शन। इसका मतलब कि व्हेन कॉल ऑप्शन इज गिवन, तो बिफोर मैच्योरिटी गवर्नमेंट के पास राइट होगा कि एनी टाइम का मतलब बिफोर मैच्योरिटी वो अपने बॉन्ड को वायदा कर सकती है, यानी बॉन्ड आपसे खरीद लेगी, यानी उस डेट तक का इंटरेस्ट पे करके और अपना लोन वापस ले लेगी। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। तो कॉल ऑप्शन विल बी गिविंग राइट टू होम, टू द बॉन्ड इश्यूअर। नाउ सेकंड ऑप्शन इज पुट ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन डालोगे तो नॉर्मली पुट ऑप्शन होता है। अब ठीक है, योर बॉन्ड विल मैच्योर आफ्टर 10 years, तब तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पुट ऑप्शन के बाद क्या होता है कि बॉन्ड होल्डर को इस बात का परमिशन होता है कि एनी टाइम वो अपना पैसा वापस ले सकता है, यानी बॉन्ड को सरेंडर करेगा या और अपना पैसा क्या करेगा, वापस लेगा। तो दिए पुट और कॉल का समझ आ गया। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं,
आपने पूछा है तो मैं जरा सिलिकॉन वैली बैंक का केस समझा रहा हूं, उसमें समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो क्या होता है कि ये आपने बॉन्ड खरीदा, यू आर अ बॉन्ड होल्डर एंड द बॉन्ड यू हैव परचेज इज 10%, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। 10% आई हैव टेकन ओनली टू मेक द थिंग्स इजी। नाउ आफ्टर सम टाइम जब आपने बॉन्ड खरीद लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने मार्केट में, फेडरल रिजर्व बैंक, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या बढ़ाया फ्रॉम 0.25% से मोर देन 4%। इट्स अ मैसिव। तो अब जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, अब जो बॉन्ड जारी हो रहा है उसका रेट जो है सपोज की 15%। न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग इशूड बाय द गवर्नमेंट एट अ रेट ऑफ 15%। तो आपको क्या होगा फिर? ठीक है, आपको बुरा लगेगा ना कि हमने जो जब खरीदा था तो उस वक्त बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? तो 10%। नाउ द न्यू बॉन्ड्स व्हिच आर बीइंग इशूड, तो दे कैरी 15%। तो इस केस में क्या होगा? पुट ऑप्शन ही देयर, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? तो आप इस बॉन्ड को क्या करोगे? बेच करके और न्यू बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे, सो दैट यू विल गेट मोर इंटरेस्ट। So when you start selling this bond, because only it's a put option, so when you start selling this bond, purpose is to withdraw the money, whatever the purpose may be, maybe to buy a new bond. So then इस बॉन्ड का सेल प्रेशर होगा, इसका सेल प्रेशर होगा, तो prices of this bond it will start falling. Yes. So why price of this bond has started? Because this market has become bearish. Bond market जो पुराना बॉन्ड का मार्केट है bearish हो गया, सेल प्रेशर there. People are basically, because they have been given the put option, so they are basically trying to withdraw their money and to invest the money somewhere else. So that's why आपने देखा कि when the rate of interest is increasing, prices of the bond they are going to fall. This is one of the reasons. Other things also there. So I hope कि शशि, ठीक है, शशि थोड़ा सा क्लास वगैरह ढंग से पढ़ो कि why SLR is kept in the form of gold. Yes, I told you कि gold prices they fluctuate. Gold prices, no doubt they fluctuate. Sometimes they increase, sometimes they decrease. But in the long term, gold हमेशा क्या होता है? अच्छा रिटर्न देता है. In the long term, gold prices always increase. Today, the price of gold is now more than 59,000. More than 59,000. Okay. When lockdown came, it was hardly 32,000. सोचो लॉकडाउन 3 साल पहले आया था, 32,000 का था, 34 सॉरी, और अभी 59 का है. In 2018, it was again 30,000. In 2008, it was 18,000. 18,000 का था. 1998, only 4,000. So price of gold, no doubt they fluctuate on regular basis. But in the long term, चाहे वो gold हो या share market हो, they are always good to give you good return. Okay, that's why it is being, okay. Tax revenue of government is increasing, but fiscal deficit is not decreasing. Tax revenue बढ़ा रहे, क्या नाम है इसका लड़के का? Okay. YouTube क्वेश्चन। तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ा, नो डाउट, लेकिन गवर्नमेंट का बजट का साइज भी तो बढ़ रहा है, बजट का साइज भी तो बढ़ रहा है। इट्स वेरी सिंपल। 2023-24 द साइज ऑफ द बजट इज रुपीज 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़। लास्ट ईयर बजट का साइज था, इट वॉज रुपीज 39.4 लाख करोड़। तो बजट का साइज बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उस रेशियो में नहीं। तो क्या होगा फिर? ठीक है, फिस्कल डेफिसिट रिमेनिंग से, फिस्कल डेफिसिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बट द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, so they are also increasing. So as a result, government has to go for more and more borrowing, leading to high fiscal deficit. This is the reason. Okay, ठीक है sir, any other question? महक ने मेंशन किया है सर, पीडीएफ नोट्स कब प्रोवाइड किया जाएगा? पीडीएफ नोट्स महक, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो। पीडीएफ पढ़ पढ़ के लड़के बर्बाद हो गए। बुक पढ़ो, प्रॉपर बुक पढ़ो, बुक पढ़ने की आदत डालें, बड़े लोगों को सुने, बड़े लोगों को पढ़े, और तब जाके अपनी सोच बढ़ाए। अदरवाइज व्हाट एवर पीडीएफ इकरा मैनेजमेंट विल बी, उनसे आप बात करें, सो दे विल प्रोवाइड यू द नोट्स। एनीवे, अदर क्वेश्चन सर, यूट्यूब क्वेश्चन, व्हाटएवर? So now no other questions, sir. Ramesh Singh better रहेगा कि नहीं? Ramesh, I won't refer you to go for Ramesh Singh book. रमेश, देखो क्या होता है इंडिया में, चल रहा है, नाम है तो चल रहा है। रमेश सिंह से बेहतर बुक है मिश्रापुरी, इंडियन इकोनॉमी। रमेश सिंह की बुक में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इनकम्प्लीट है,
incomplete है, it's not comprehensive. Moreover, on many occasions it has been written in a wrong manner, गलत भी लिखा हुआ है. आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर भी अब देख लो. पुष्पा ने मेंशन किया है सिलिकॉन वैली एंड अदर 2 बैंक्स कोलैप्स. इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2008 में भी देखोगे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, when more than 120 banks of the world they became insolvent, during those period also Indian banks were earning profit. और अब तो इंडियन बैंक they are very good. Yes, liquidity position of Indian bank it's a very good. अब सर्वे आपने पढ़ा होगा कि statutory requirement of SLR is 18%, but the actual SLR maintained by the Indian bank they are more than 25%. अरे हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, सिंपल सी बात है. यानी किसी कंट्री का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट जो 3-4% के बीच में जाके फंस जाता है, यानी लाख कोशिश करने के बाद वही 2.5-3-4 के बीच में रहता है, तो दैट इज कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट. यानी कि ग्रोथ रेट इज नॉट इंक्रीजिंग, एंड दैट हैपेंड अर्लियर. याद होगा 1978 में एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे राजकृष्ण साहब, ही गिव दिस नेम ऑफ हिंदू ग्रोथ रेट. तो अभी तो इंडिया ग्रोथ रेट बेसिकली इज वेरी हाई, पर्टिकुलरली वी केम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन आफ्टर 91. लेकिन आपने अभी पढ़ा होगा आरबीआई के जो गवर्नर हैं रघुराम राजन एक्स, तो ही गिव द स्टेटमेंट कि अगेन चांसेस है देयर कि इंडिया में बी फॉलिंग इनटू हिंदू ग्रोथ रेट. तो ये सब चीजें देखते क्या होता है. ट्रांजैक्शन टैक्स देखिए कैसे काम करता है. ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसको बोलते हैं. जब आप कभी भी सिक्योरिटी खरीदते हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदते हो और या जब बेचते हो, तो दोनों केस में गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना होगा. इट्स वेरी सिंपल है. वो ऐड होके और डिडक्ट होके आता है, ऐड या डिडक्ट होके रहता है. यस, देखिए इंडिया, रघुराम राजन साहब का जो है बिल्कुल कहना है कि इंडिया में बी फॉलोइंग इनटू अगेन हिंदू ग्रोथ रेट. इसलिए कंसेप्ट आप देखा होगा यूपीएससी पूछा था, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट दैट कैन बी सस्टेन फॉर लॉन्ग. यानी हमें एक ऐसा ग्रोथ मेंटेन करना चाहिए जो लंबे समय तक चले. ये नहीं कि एक साल 10% हो गया, अगले साल 3% हो गया. So potential growth now, it has become more relevant rather than GDP growth rate. Okay. Prelims 2023 के लिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच. फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच है ना, हार्डली इट जो है 20-22 पेज का है. तो गो थ्रू दैट, देखिए उसी को आप क्या करें पूरा डिटेल में. और नहीं तो व्हाट आई कैन डू, तो आई हैव देखिए ये रिटन द बजट इन माय ओन हैंड राइटिंग, जो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके. ठीक है, तो मेरे हैंड राइटिंग में है, तो अगर वो आपको चाहिए होगा तो वो मेरे पास अभी भी है, मैं अपलोड करवा दूंगा. तो दैट इज नॉट एन इशू. सर्वे यू विल हैव टू गो थ्रू इन डिटेल. सर्वे इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्री और मेंस. ओके, और बजट की क्लास जो है, देखो ई रूपी, देखो जब भी टेक्नोलॉजी आता है ना, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट. आई एम सो वीक इन टेक्नोलॉजी. Regarding computers, I know only 2 things: how to open the computer, how to close it. तो बेहतर होगा ये चीज कभी आप यूडी सर से पूछ लेना. ठीक है, ही इज मोर कंफर्टेबल, इनफैक्ट ही इज द मास्टर. तो वहां मैं गलत बताऊं उससे बेहतर जो है कि मैं नहीं बताऊं. कैसे ये काम करेगा वो तो समझ आ गया, रुपया होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये तो मैं बता दूंगा. लेकिन हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, so that I fail to understand, and those things I fail to understand, I never interfere. This is my limitation. Okay. देखो अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व है, इट इज अराउंड 8,000 मेट्रिक टन, एंड इंडियन रैंकिंग इज 5th. बट द हाउस वाइफ्स ऑफ इंडिया, सो दे आर ऑल टुगेदर होल्डिंग राइट नाउ इट्स 25,000 मेट्रिक टन. लेकिन ये जब तक आरबीआई के पास नहीं जाएगा ना, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है. अब आरबीआई गवर्नमेंट, ये आरबीआई इंडियन पीपल को फोर्स नहीं कर सकती है. लेकिन अगर हम लोग, भारत के लोग जो है, अगर नेशन के इंटरेस्ट में काम करें और वही जो है अब गोल्ड को जो है डिपॉजिट करें, मे बी अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. तो बजट में भी हिंट है, आपने देखा होगा बजट में वन ऑफ द लाइन दैट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि गवर्नमेंट ने कहा है कि व्हेन यू कन्वर्ट, इफ द पीपल ऑफ इंडिया दे कन्वर्ट फिजिकल गोल्ड इनटू ई गोल्ड, तो देन देयर विल बी नो कैपिटल गेन टैक्स. यानी अगर आपके घर में गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड, तो अगर आप ई गोल्ड में कन्वर्ट करोगे, तो जो भी आपका गेन होगा, यानी कैपिटल गेन, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट चाहती है कि पीपल ऑफ इंडिया दे कम फॉरवर्ड एंड गिव देयर गोल्ड.
अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत कंसेप्चुअल है। सपोज की एज्यूम कर लो कि सारे हाउसवाइफ 25,000 मेट्रिक टन कल को मान लो आरबीआई के रिजर्व में आ गया, तो आपको पता है क्या होगा? परसों जो है इंडियन करेंसी विल बिकम द मोस्ट पावरफुल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया विल गो फॉर गोल्ड रिजर्व। तो इंडिया का मतलब कि जब नोट छापेगी तो रिजर्व में गोल्ड को रखेगी। और उसके बाद क्या होगा? ये अमेरिका ने किया था, देखिए, जस्ट एट द टाइम ऑफ ब्रिटेन वुड। तो इंडियन करेंसी का फिर क्या होगा? एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। पूरी दुनिया डॉलर से परेशान है, लोग डॉलर का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो नेक्स्ट डे जो है डॉलर बहुत ही पुअर हो जाएगा इंडियन रूपी। तो ये सब चीजें हैं, क्या कहोगे? इकोनॉमिक सर्वे का समरी जो है सफिशिएंट रहेगा, तो वो पूरा इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं पढ़ सकता, ऐसे टाइम नहीं लेगा। रीजन बिग कि आधा तो उसमें डेटा है, तो उसको चैप्टर वाइज अलग कर लो। एक साथ बैठोगे इतना मोटा लेके ना, फिर दिक्कत होता है, लगता है साइकोलॉजिकली इतना आप कौन पड़ेगा। तो 10 पेज 12 पेज का क्या है आपका, ये इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वाइज है, तो उसको अलग करके स्टफल करके और तब जो है एक को पढ़ोगे, हार्डली 1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट। तो वो करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा because that basically it is written in comprehensive manner, so that will give you some vision. लेकिन when you see the highlight, you will come to know the main feature only, but you won't be able to connect the things. आप चीजों को लिंक नहीं कर पाओगे, so that is the key. तो ये थोड़ा सा मेरा सेशन होगा कि आप कर लीजिए। Okay. Any other question? So last question for the day. So approach with respect to economics for prelims and for mains. क्या है? So approach जो है पढ़ाई की for prelims और mains, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कैसे रखें? देखो, जो लोग दो तरह के एग्जाम हैं, एक तो आपका जो है इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उनका अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा। और कुछ लोग हैं जो नेक्स्ट ईयर देंगे, तो पहले हम करें कि जो इस साल दे रहे हैं, तो अब आप थोड़ा सा मेंस की पढ़ाई बंद कर दो, 2 महीने का टाइम है, ठीक है। अब सिर्फ जो है प्रीलिम्स की तैयारी करें, सिर्फ प्रीलिम्स की, और क्वेश्चन बनाना शुरू करें। प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करोगे एटलीस्ट फॉर द लास्ट 5 to 7 years, तो उसमें भी आपको काफी मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का थीम वही रहता है, सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाता है। तो एक तो वो आपको करना है, और सेकंड कि उसके बाद आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की तैयारी करोगे, तो रिवीजन करोगे, आपने प्रिपरेशन कर लिया होगा। लेकिन जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले मेंस का प्रिपरेशन करें। मेंस का टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक लेके गो थ्रू इन डिटेल, बिकॉज सही पूछो तो ऑब्जेक्टिव टाइप कोई पढ़ाई होती नहीं है, कोई नहीं होती है। एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, अनगिनत। तो आपका अप्रोच टॉपिक होना चाहिए, गो थ्रू द टॉपिक्स इन डिटेल, और व्हेन द टॉपिक इज ओवर, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यू कैन इजीली सॉल्व। ये अप्रोच उल्टा नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन वाइज कि क्वेश्चन इतना कर लो कि कोई भी नहीं, दैट इज रॉन्ग बेसिकली। तो ये आप करोगे पहले जो फॉर द 2022, तो मेंस का प्रिपरेशन करोगे, देन लास्ट में जाकर के प्रीलिम्स के लिए जाओगे। बहुत सिंपल है, प्रॉपर अप्रोच। मैंने क्या कहा, अगर आप खुद कर रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आपने कहीं पे ज्वाइन किया है तो बेहतर क्या होगा, जो ऑर्डर आपको फॉलो करना है, फर्स्ट इज टू लिसन, देन टू रीड, और सबसे अंत में टू राइट। राइटिंग सबसे अंत में आता है, तो राइटिंग इसके लिए डेवलप्ड है, नॉट है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने देखे आप लोगों के, तो मुझे इस चीज रियलाइज हुआ कि बहुत सारे छात्र हैं, दे आर नॉट गुड बेसिकली, दे आर नॉट गुड लिसनर। वो जो है सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कि बहुत डायरेक्टली हमने क्लास में डिस्कस किया इन डिटेल। या तो हो सकता है आपने वीडियो नहीं देखा हो, क्या हो सकता है यू आर बिजी मेकिंग द नोट्स। डोंट डू दैट, फर्स्टली यू लिसन टू मी। So these are the, बाकी तुम्हारे मेंटरशिप प्रोग्राम में सारे लोग हैं, they are expert basically, whether it's UD sir, Khan sir, Main sir, so they will guide you, and basically they are guiding all the time. So I hope कि you got the answer. Shall we conclude for today? Yes sir, please sir. Thank you sir. Okay, thanks for watching, और हम लोग मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में भी, कल हो या जब भी हम लोग मौका मिलेगा, we will get the notification. So get ready with all the questions. Thank you. थैंक यू सर। कल का जो इकोनॉमिक्स का डाउट क्लासेस में था, वो हम थोड़ा सा लेट शुरू करेंगे,
समथिंग अराउंड 7-7:30 उसकी नोटिफिकेशन हम ग्रुप्स में डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू